Dear friends, welcome in NIT Alwar channel. Today we are going discuss a shaft. A shaft, which is device is used to transmit power from one element to another element or another way. Shaft, which is device is used to transmit power machine to source. Machine to source is known as shaft. Different types of shaft. First is solid shaft and second is hollow shafts. Solid shaft is diameter D and hollow shaft is outer diameter capital D and inner diameter small d. Solid shaft is a fully solid and hollow shaft is a inner part is hollow and outer part is solid. Inner dia is small d and outer dia is capital D. Now we have calculated polar moment of inertia for both shaft. First is solid shaft and second is hollow shaft. First of all, we have calculated solid shaft polar moment of inertia. Polar moment of inertia J. J equal to Ixx plus Iyy. Ixx is polar moment of inertia in x direction. In x direction. And Iyy moment of inertia in y direction. J polar moment of inertia summation of xx direction moment of inertia and y direction moment of inertia. J equal to pi by 64 d4 plus pi by 64 d4. Diameter is same in any direction x, y or z direction for circular section. Ixx equal to pi by 64 d4. Iyy equal to pi by 64 d4. Now summation of both moment of inertia. J equal to pi by 32 d4. J equal to pi by 32 d4. D is diameter of solid shaft. And second point is hollow shaft. Now we have calculated polar moment of inertia for hollow shaft. Same way, J equal to pi by 64, outer diameter d4, inner diameter small d4. It is a shaft. Inner part is hollow. It is thickness. Inner dia is small d. Outer dia is capital D. Now to calculate moment of inertia, I xx equal to pi by 64 d4 minus d4. We have already discussed in past classes polar moment of inertia or moment of inertia, but now we have calculated polar moment of inertia. J equal to pi by 64 outer dia d4 minus inner dia d4 plus similarly pi by 64 outer dia d4 minus in small dia d4. Overall we have calculated polar moment of inertia J equal to pi by 32 outer dia d4 minus inner dia d4. D is a external dia and small d is a internal dia of hollow shaft. Now polar moment of inertia completed in this chapter. Now we have calculated relationship between torque T and shear stress tau. We have read torsion equation T upon J and G theta upon L and tau upon R. This is equation. T torque transmitted unit is Newton into meter or Newton into mm, and J is polar moment of inertia. Polar moment of inertia unit is mm
for, or meter for. And G is modulus of rigidity, and theta is angle of twist. Theta unit is radian or degree. L is length of shaft. And D is dia, outer dia. Okay. Tau is shear stress and R is radius of curvature for solid shaft. Now we have calculated relationship between torque and shear stress for solid shaft. Our main motto relationship कैलकुलेट करना है. तो सॉलिड शाफ्ट के लिए T अपॉन जे, जी थीटा अपॉन एल एंड टो अपॉन आर. फर्स्ट T अपॉन जे, सेकेंड जी थीटा अपॉन एल, थर्ड टो अपॉन आर. नाउ फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, T अपॉन जे, टो अपॉन में आर. जे for solid shaft T equal to J टो अपॉन में R. तो T अपॉन J टो अपॉन R, T अपॉन J पाई बाई 32 D4 इक्वल टू टो अपॉन में R D बाई 2. D से D कैंसिल हो गया, 2 से 16 कैंसिल हो गया, 16 ऊपर चला गया, 16T अपॉन में पाई डी क्यूब इक्वल टू टो. यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. टो इक्वल टू 16T अपॉन में पाई डी क्यूब. टो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब और टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क. Now second part is for hollow shaft to calculated relationship between torque or shear stress. T upon J pi by 32 D4 minus small d4 equal to टो upon capital D by 2. 2 से ये कैंसिल हो गए 16 एंड 16 अबव चला गया 16T अपॉन में पाई D4 माइनस D4 एंड टो अपॉन D हियर चला जाएगा, इधर चला जाएगा 16TD अपॉन में पाई D4 माइनस स्मॉल D4 अपॉन में D. तो टो इक्वल टू 16T अपॉन में पाई D4 माइनस D4 अपॉन में D. तो हमने ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन पढ़ लिया है और एक इसमें हमने टॉर्क और शियर स्ट्रेस का बीच में जो रिलेशन था वो पढ़ लिया है. नाउ अब हम अजम्पशन ऑफ टॉर्जन शाफ्ट पढ़ेंगे. पहला अजम्पशन है मटेरियल शुड बी होमोजीनियस. मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस मीन्स सेम मिक्सचर इन सॉल्यूशन इज नॉन एज होमोजीनियस. एंड सेकंड इज मटेरियल शुड बी फॉलो हुक्स लॉ. हमारे पास में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज हुक्स लॉ. हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेस is directly proportional to strain. What is stress? Stress is force upon area या force per unit area. And what is strain? Strain is change in dimension. Strain is change in dimension upon में original dimension. तो at least overall conclusion material should be follow Hooke's law. Material should be following isotropic. Isotropic, what is means by isotropic? Which material is expand in three direction x, y और z is known as isotropic. तो इस तरह से ये हमारा शाफ्ट का जो डेरिवेशन है, शाफ्ट का जो हमने इम्पोर्टेंट रिलेशंस पढ़े हैं ये कंप्लीटेड होते हैं. अनदर क्लास में हम डेरिवेशन ऑफ टॉर्जन इक्वेशन T अपॉन J, जी थीटा अपॉन L एंड टो अपॉन R डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.